Hi there, and welcome to the next session of Unacademy Empower. This is Amar here. We will continue our discussions on how to use ChatGPT in product management. So, Unacademy Empower, as we've mentioned before, is a new channel launched by Unacademy with the intention to bring product management to a much larger audience. And there are a few of us peers who will be talking about different aspects of product management as we go through the next few weeks. Do log on to YouTube, get onto the channel, and subscribe to receive the latest updates and see the latest videos. Yeah. So, in today's session, what we would cover, as I mentioned, is ChatGPT. We're going to keep it at a beginner level. We're not going to get supremely technical or very, very in-depth about it. But today, what we will cover is idea generation. So in the last session, which was on research and competition analysis, we also covered a little bit about idea testing. So through the research or competition analysis, you might have various ideas that you may have, and how could you maybe use ChatGPT to test them. What we will cover today is how can you use ChatGPT to actually generate the ideas, right? So just to kick off, we're going to cover a little bit about what are the benefits of ChatGPT. Firstly, as mentioned many times, and I'm sure you know, it's efficient. इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही जल्दी और काफ़ी accurate results ChatGPT से निकाल सकते हैं, जो आपको वैसे अदरवाइज बहुत टाइम लगता, आपको रिसर्च करना पड़ता, आपको गूगल सर्च पर टाइम स्पेंड करके वेरियस आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते, एट्सेट्रा. ChatGPT आपको एक सिंपल प्रॉम्प्ट से ये सारा इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली दे देता है. सेकंड, कि जो इंफॉर्मेशन वो आपको देता है बहुत ही डिटेल्ड और इंसाइटफुल डेटा रहता है, राइट? और इसमें ये बात आप जरूर रहिएगा कि हम ChatGPT को कवर कर रहे हैं with a more focused lens on how can we use it in product management specifically. But that does not mean that what we are covering in these sessions, you can't take and use it for your own purposes, for your own work, for your own research, for your own testing that you may want to do, and whatever else that we may cover. Okay, it is cost effective. तो ChatGPT 3.5 जो है वो फ्री है. इसमें आप ये चीज़ एक ज़रूर याद रखिएगा कि ChatGPT 3.5 आपका सिर्फ सितंबर 2021 तक का डेटा उसमें रहता है. उसके आगे का डेटा उसके पास नहीं होता है. अगर आप कुछ रिसर्च करें या कुछ आइडिया जनरेट करें, कुछ डेटा आप लें ChatGPT से, वो आपको तभी तक का डेटा दे पाएगा. मगर हाँ, ज़रूर आप क्या कर सकते हैं कि वो डेटा लेके वापस गूगल सर्च में या कहीं और आप उसको वापस से एक्सप्लोर करके डेटा इन्फॉर्मेशन डाल के बोल सकते हैं कि मेरे को नया इन्फॉर्मेशन, इसका अपडेटेड वर्जन क्या है वो आप दे दो. तो एक बेसलाइन, एक पूरा बैकग्राउंड आपको ChatGPT दे देगा और उसको आप फाइन ट्यून करके खुद आप अपने तरीके से कर सकते हैं. So what we are covering today, as I mentioned, is how do we use ChatGPT for idea generation, कि हम नए आइडिया कैसे निकालें ChatGPT का इस्तेमाल करके. इसकी इम्पोर्टेंस बहुत सिंपल, कि ये बहुत ही क्रूशल रहता है हमारे लिए अपने कंपटीशन के आगे रहने के लिए. जो हम इनोवेशन बोलते हैं, आइडिया जनरेशन बोलते हैं, यही आपकी एक चीज़ है जो रेवेन्यू इंक्रीज कर सकती है, नए फीचर्स प्रोडक्ट में ला सकती है. जो कंपेटिटर्स आज सोच रहे हैं, अगर आप पहले से इस पर आइडिया जनरेट करके इस पर काम करके इसको आगे बढ़ा दें तो आप फर्स्ट इन मार्केट हो सकते हैं. समझिए कि कोई कंपेटिटर ऑलरेडी एक फीचर या प्रोडक्ट रिलीज कर चुका है, आप देख सकते हैं ChatGPT के थ्रू कि इसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और आप अपना प्रोडक्ट उसके हिसाब से बिल्ड करके टू मेक इट बेटर देन द कंपेटिटर आइडियाज जनरेट करके ChatGPT से आगे बढ़ सकते हैं.
इसमें जैसे हमने पहले भी किए हैं, हम थोड़ा देखेंगे कि कोई प्रॉम्प्ट्स जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं आइडिया जनरेशन के लिए. So we will go through the prompts first, we'll explain them a little bit, and then we will open ChatGPT and use them live for you to be able to see and experience what happens. Before that, what are some of the key use cases that we can cover under idea generation? One is brainstorming sessions, right? For you to generate new ideas. So समझो आप 5 लोग बैठे हैं, या तो प्रोडक्ट की दुनिया में आप एक ग्रुप सेशन कर रहे हैं, वाइट बोर्डिंग कर रहे हैं कि हम क्या नया बना सकते हैं, और हज़ार आइडिया आ सकते हैं. आप चैट जीपीटी पर बैठ के चैट जीपीटी को भी एक क्या बोल सकते हैं, यू कैन मेक दैट पर्सन योर 6th person in the team, right? As to ChatGPT give me ideas around this, right? What is the basic steps around usually brainstorming sessions? आप क्या करते हैं? आप preparation करते हैं, आप इसकी incubation करते हैं, आप फिर इसका inspiration लेके उसका verification करते हैं, और फिर आप उसकी execution करते हैं. तो ये जो पूरी process है आप ChatGPT के थ्रू भी कर सकते हैं. Second thing is जब आपके पास एक आइडिया आ गया है, आप उसकी सिलेक्शन, हो सकता है समझो कि आपकी टीम में लेट्स टेक, अगर आप फ्रेशर हैं, आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं बाकी फ्रेशर्स के साथ, और उस पर 5 लोग बैठे हुए हैं और चैट जीपीटी छठवा आ गया है साथ में, और आपके पास समझो 20 आइडिया आ गए. आप ये कर सकते हैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कि ये आइडियाज़ को, पर 20 आइडिया तो हम नहीं कर सकते हैं, इसके टॉप 2 आइडियाज़ क्या हैं हम वो करते हैं, या टॉप 1 आइडिया क्या है वो करते हैं, और ये कौन सा आइडिया होना चाहिए जो सारे पैरामीटर्स में फिट हो जाए. आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके ये वाला आइडिया सिलेक्ट कर सकते हैं. एक बार समझो आपने ये सिलेक्ट कर लिया, फिर आप ये वाले आइडिया को फर्दर फाइन ट्यून कर सकते हैं, इसको रिफाइन कर सकते हैं बिफोर यू मूव इनटू द एक्चुअल एक्सिक्यूशन पार्ट of your project or the development of your particular product or feature. So एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं बोल रहा था, एक सिनारियो लेते हैं. अब प्रोडक्ट की दुनिया से हैं हम प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, but you can apply this to any kind of field and any kind of scenario that you may be in. So as a product manager working for a habit forming app startup, habit forming माने क्या कि हम सबको पता है कि थोड़ी मुश्किल होती है कि एक हैबिट फॉर्म करने में, कोई बोलते हैं 21 दिन लगता है, कोई हैबिट्स के लिए 40 दिन लगते हैं, मगर हम ये कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते हैं और 2-3 दिन करने के बाद छोड़ देते हैं. समझो मैंने एक लिया है कि मैं एक हैबिट फॉर्म करूँगा कि मैं रोज़ एक चैप्टर पढ़ूंगा कोई किताब का, मगर 2-3 दिन करके कुछ ना कुछ आ जाता है और मैं ये छोड़ देता हूँ. मगर एक ऐप निकला है जो ये हैबिट फॉर्म करने की आपकी मदद करता है, और मैं वो ऐप का प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी जो यूज़र इंगेजमेंट है, माने जो यूज़र्स आ रहे हैं वो ऐप पर कितना रह रहे हैं, किस चीज़ों से इंगेज कर रहे हैं, उसको मैं इंक्रीज कैसे करूँ, वो नए फीचर्स उसके लिए मैं क्या बनाऊँ, ये मेरी दिमाग में सोच चल रही है. तो एक चीज़ यहाँ पर इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि कंपनी का यूज़र का जो बेस है वो बहुत बढ़ गया है, काफ़ी सिग्निफिकेंटली ग्रो हो गया है. तो माने नए यूज़र्स काफ़ी आ गए हैं, पुराने यूज़र्स भी हैं, तो टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स काफ़ी हो गए हैं. तो आपको अब एक फ्रेश आइडियाज़ चाहिए जो ये पुराने यूज़र्स को रखें ऐप पर, और भी नए वालों को, और जो अभी अभी आए हैं उनको भी अट्रैक्ट करके ऐप पर इंगेज करें. तो हम क्या प्रॉम्प्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए? हम ये बोल सकते हैं कि चैट जीपीटी आप मेरे को थोड़े इनोवेटिव फीचर्स बताओ जो यूजर एंगेजमेंट को बूस्ट करे मेरे ऐप में. सिंपल सा, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. हम ये भी पूछ सकते हैं कि चैट जीपीटी आप मेरे को ये बताइए कि हैबिट फॉर्मिंग जो मेन गोल है ऐप का, इसको ज्यादा मजेदार और पर्सनलाइज, माने जितने भी यूजर्स आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा इंडिविजुअल और पर्सनल ये कैसे रहे.
ये हम क्या कैसे कर सकते हैं। और फिर तीसरा कि मैंने एक नया फीचर सोचा है बाय नाउ पे लेटर का, है ना, जो सारे ऐप्स आजकल कर रहे हैं। मगर ये वाले ऐप के लिए जो एक हैबिट फॉर्मिंग ऐप है, ये इसमें चलेगा नहीं चलेगा, फीडबैक आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, एक क्रिटिक बन के मेरे को बताइए। अब ये ज़रूर याद रखिएगा जो पहले भी मैंने ये वीडियो में कहा है, और मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ और कहता रहूँगा कि आप जो भी आइडिया लेते हैं उसको फर्दर रिफाइन और वैलिडेट ज़रूर करिएगा। और ये सिर्फ चैट जीपीटी से मत करिएगा, अपने खुद का नॉलेज इस्तेमाल करके, यूजर्स से बात करके, ये सब ऐसे करिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, लेट्स टेक दिस एंड गो टू चैट जीपीटी and use it as an example and see what happens. तो सबसे पहले हमने कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया है। अब यहां पर चैट जीपीटी हमको ये बोल रहे हैं कि मेरे को इंफॉर्मेशन आप ऐप के करंट फीचर्स के बारे में दे दीजिए, इसके टारगेट ऑडियंस क्या हैं, इसके हैबिट्स क्या हैं, इट एम्स टू हेल्प, let me know if there are specific goals or metrics you want to focus on such as increasing etc etc। तो इसका हम एक बेसिक एक रिस्पॉन्स लिख देते हैं ताकि जो बाकी प्रॉम्प्ट्स हैं वो इनकम्प्लीट न रहे। तो इसका पहला सवाल क्या है, सम इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्स करंट फीचर्स। बेसिक फीचर्स करके मैं लिख देता हूं पहले। ट्रैकिंग, performance of selected habit, ability to choose pre-made habits such as book reading and working out and meditating, but also ability to create a new habit। हम इसमें ये फिर लिख लेते हैं कि notifications and awards on completion of daily tasks। ये आपके बेसिक फीचर्स मैंने 3 लिख दिए। ऑफ कोर्स बहुत सारे और होते हैं मगर ये 3 बेसिक चीजें मैंने लिख दी। इसमें हम बोल देते हैं मेन मेट्रिक, वो है यूजर डेली यूजर एंगेजमेंट। ठीक है, ये हमने इंफॉर्मेशन दे दिया। अब चैट जीपीटी ने क्या किया कि मैंने अभी कुछ इसको बोला नहीं है,
कि आप ये प्रॉम्प्ट बनाइए, मगर इसने इसमें रिकग्नाइज कर लिया ये सेंटेंस में कि ये भी एक प्रॉम्प्ट है कि मेरे को फ्रेश आइडियाज चाहिए कि टू रिटेन एग्जिस्टिंग यूजर्स एंड अट्रैक्ट न्यू वंस. So it's already combined this prompt that I gave and my answer to its question on this prompt and given you back already some feature ideas to enhance user engagement and retention. Right? So ये आपके options यहाँ दे दिए हैं ChatGPT ने. So ये innovative features वाला जो है already आपको आंसर मिल गया है. अब हम इसमें सेकेंड प्रॉम्प्ट ये जो है ये इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या होता है. तो आपको क्लियर स्ट्रैटेजीज दे रहा है कि आपको हैबिट फॉर्मिंग एज अ एक्सरसाइज ज्यादा मजेदार और पर्सनलाइज कैसे बनाना चाहिए कि आप पर्सनलाइज हैबिट रिकमेंडेशन दे सकते हैं लोगों को. तो आप डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके हर यूजर के जो इंटरेस्ट हैं, उनके गोल्स हैं, उनके पास्ट हैबिट्स क्या बने हैं, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं, ये अलाइन करके आप वो प्रोसेस को पर्सनलाइज कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस को पर्सनलाइज कर सकते हैं, कि रेकमेंड कर सकते हैं कि आप आज कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आपका टाइम खत्म हो रहा है, तो आप ऐसे करिए ताकि आपका कंप्लीट हो जाए. आप थोड़ा इसको अवतार्स और थीम्स को कस्टमाइज ऑप्शन दे सकते हैं. दोस्तों के साथ हैबिट एक क्रिएट करने, समझो बुक रीडिंग क्लब, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट वन ऑन वन बाय योरसेल्फ, आप ऐसे बना सकते हैं कि आप दोस्त के साथ ही ऐप को एक गेम की तरह बना के compete करें कि आज मैंने कर लिया, आपने नहीं किया. राइट? So there are various such suggestions that ChatGPT has given to you. Right? Now, it is not to say that these suggestions you can't come up with yourself, or maybe sit in a group as product managers, as designers, and come up with. But ChatGPT helps you immediately come up with some instant thoughts, saves you a lot of time, and you can build on these, right? You can further fine tune, you can talk about them, you can use this for ideation. The point is to generate the ideas, right? अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पर. कि अब आप मेरे को क्रिटिकली बताइए कि ये जो एक फीचर है बाय नाउ पे लेटर का, ये मेरे ऐप के लिए चलेगा या नहीं चलेगा. ठीक है. ऑन ऑप्शन फॉर योर ऐप, प्लीज नोट दैट इंटेंडेड टू बी कंस्ट्रक्टिव एंड हेल्प यू इनहांस. तो बोल रहा है क्लियरली आपको फीडबैक की टर्म्स एंड कंडीशंस आप क्लियर रखिएगा. आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूजर को एडुकेट करिए इस बारे. आप यूजर का फिर वो बता रहा है आपको कि आपको ये एक बैकएंड में एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि क्रेडिट वर्दीनेस कैसे आप असेस करोगे यूजर का. सबको तो आप दे नहीं सकते हो क्योंकि सब पे नहीं करेंगे फिर बाद में. फ्लेक्सिबल पेमेंट शेड्यूल रखना चाहिए ताकि यूजर अटक ना जाए. यूजर को सपोर्ट देना चाहिए, कस्टमर सेंटर एटसेट्रा. अर्ली पेमेंट के लिए आप क्या गेमिफाई करके आप कोई कैशबैक दे सकते हो या कोई पॉइंट सिस्टम दे सकते हो एटसेट्रा. राइट? एंड मेनी सच अदर पॉइंट्स. सो जैसे हमने देखा, वी टुक दिस वन एग्जांपल where we are talking about a habit forming app startup, right? And how can you use certain prompts to better understand and create new ideas to improve your user engagement and retention. Let's go to the next slide. Like in my previous video, I mentioned about this newsletter that I follow called Hello PM, and you can find him on LinkedIn as well. So there are some idea generation prompts that he's given, which I'd love to share with you as well. So एक prompt उन्होंने दिया है कि users मेरे म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप पर प्लेलिस्ट नहीं क्रिएट कर रहे, एंड मैं जानता हूं कि उनको
बहुत सारे बटन्स प्रेस करने पड़ते हैं, बहुत क्लिक्स रखने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ प्लेलिस्ट। तो मैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? ये एक प्रॉम्प्ट है। दूसरा प्रॉम्प्ट कि अब ये बहुत सारे लोग आप जो देखेंगे ये वीडियो, फ्रेशर्स जो शायद प्रोडक्ट मैनेजमेंट में घुसना चाहेंगे, तो ये वाला प्रॉम्प्ट जो है कि आई एम लुकिंग फॉर finding a product manager job in the financial technology sector. What can I do to make a strong portfolio? I become a good candidate for such companies, right? So I think this is a very important one. I've kept it in idea generation prompts and not in the resume building or interview section. Because this is essentially how you can use ChatGPT to create ideas not just for product problems, but if you are a product which you are essentially selling to your recruiter or the hiring manager, how can you create your product in a certain way? That's why I kept it here. Yeah. So let's take both and see what we get on ChatGPT. मैं इसको अभी ये वाला जो मैं हमारे पिछले वीडियो में था जहाँ पर हम एक म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप के बारे में रिसर्च एंड एनालिसिस एंड प्रोडक्ट आइडिया टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे थे यूजिंग चैट जीपीटी, ये मैं उसमें डाल के देखता हूँ बिकॉज दैट इज़ द थ्रेड दैट हैज़ कंटिन्यूड. इफ यू हैव not seen that video, please do watch that video because it's a great continuation from that video into this particular topic and it all connects together. Okay, so one thing that I will say here is there is a lot of prompts and information which already exists on top over here, correct? Which I did in the previous video, and I have used that and utilized that. I'd suggest that don't try and create a new chat every single time and build your ChatGPT chats in such a way that you can use information like a thread, जैसे एक email thread होता है, because it is using that previous information to give you more better, clearer, concise and greater responses, right? You can of course start a new one, मगर अगर आप start करोगे सिर्फ ये sentence के साथ बिना कोई context का, तो ChatGPT आपसे ये पूछेगा ज़रूर कि आप मेरे को और information चाहिए होगा आपके response देने के लिए. हो सकता है कि और उसके आगे कुछ ना बोले, ये भी हो सकता है कि ये बोल के आपको बोले कि मैं जनरली आपको 3-4 ये एडवाइस दे देता हूं, राइट? सो टोटली अप टू यू how you would like to go about this. So to the question that users are not creating playlists, what can I do? So here we go. It's given you various suggestions such as smart playlist creations, one-click playlists, you can create templates, you can use voice command and create your playlists, right? You can do collaborative playlists such as with your family, and it's also talking about maybe add some rewards into the system for creating playlists so that users get a little more used to it. You can do tutorials, right? So you will notice, for example, something Airbnb does a lot, right? They have when you open the app and if they have a new feature जो उन्होंने launch किया है, तो एक वीडियो आता है पहले होम स्क्रीन उसके पीछे रहता है और सामने में एक वीडियो रहता है कि ये एक नया फीचर हमने लॉन्च किया है, इसके बारे में आप समझ लीजिए, इसको इस्तेमाल करिए. So you can do things like that, right? Let's take a look at the other prompt which has to do with you're looking for a job. And what I will do this time is
I have you in previous videos, we've covered building resumes, we've covered interview preparation. I won't use those for a minute, and I will simply create a new chat and just put in this prompt and see what happens. The other reason I'm doing this is because those videos, if you have watched it, if you have not, please do. There is things which I have learned, my peers have learned over the years on resume building and interviews, which is mentioned there, and how you can use ChatGPT to make it easier. And the other reason I've not put it there is because we've talked about the education sector there, the edtech sector, and here we are referring to the fintech sector, right? So what is it given you? That you should conduct a deep, in-depth market analysis. You should have a very clear product vision and strategy, right? Your user personas, your PRDs, etc., etc. These are all things which it's talking about. What is the portfolios that you should have to show an organization that I can do the job of the PM that you need. And these are very important. Okay. Now, while these are things that you will do every day as a product manager, right? If you can showcase this maybe through portfolios, maybe through, you can create your portfolio on a website, on a Notion document also, right? There are some fantastic, very senior PM leaders out there who I've seen recently using Notion documents and circulating it for free on LinkedIn to tell product managers that please create these things for yourself, right? There is, Hello PM has done it, Swagwala PM has done it. There are a bunch of these people, right? So there are some of these basic things that you should have in your kitty, which talk about you and your skill sets as a product manager. Let's try for just a minute, right, to put this into an interview, the interview scenario that we had done earlier, right? Or rather, let's put it into the PM resume, right? Because it's part of that whole thing where you have to build the resume, and the portfolio then comes along with the resume. Let's put it here. And let's change financial technology to educational technologies. Yeah. And see what happens. And it's giving you pretty much the same response. Just the wording is a little different. And it would give you a little more specific information with respect to the education technology sector, your resume that you've shared above, etc. Right? That's the key difference. So as an ending note, as I've mentioned in previous videos, it's important for us to remember certain limitations that ChatGPT has. तो इसमें एक तो आपका डेटा एक्यूरेसी जो है, ChatGPT 2021 सितंबर तक ही डेटा देता है, उसके बाद नहीं देता, मगर वो वाले डेटा में भी इनएक्यूरेसी हो सकता है, तो आपके सारे डिसीजंस और कंक्लूजन सिर्फ ChatGPT के बेसिस पर मत करिएगा, खुद अपना रिसर्च भी करिएगा. लैंग्वेज बैरियर्स हमने इसके बारे में बात की हैं, right? When you're working on products which are beyond your language in fluency, you should be careful as to the kind of responses you get. ChatGPT, please remember, is not a replacement. It is a tool. It is one of the many AI tools that you should skill yourself on how to use, but also have your skill sets as a product manager to speak to users, your domain expertise that you're building, your stakeholder skills, whatever skills that you may have, and your strengths that you build, right? Thank you very much. We've come to the end of this video. I hope this was helpful for you. Please do leave your comments. It helps us to understand how we can fine-tune our content even further for you. Have a great day. Speak to you soon.